मसाई केर परिवर्तनकारी रेवेका सत्य घटना पर आधारित। Rebecca, the Masai Changemaker, based on a true story. Maithili translation by Gajendra Thakur. Voice by Gajendra Thakur. मसाई सभक देश माने दक्षिण पश्चिम केन्या मे रेबेका नामक एकटा बचिया रहैत छलीह। रेबेका एकटा पैघ राष्ट्रीय अभयारण्य लग रहैत छलीह, जतऽ सोना सन रंगक सिंह आ पैघ भूर रंगक हाथी सब रहैत छल। रेबेकाक परिवार लग माल जाल, भेड़ आ बकरी सब छलै आ ओकरा सभक भोजन लेल ओ सब खेती पर आश्रित छलाह। रेबेका स्कूल जाइत छलीह, मुदा जखन ओ घर पर रहैत छलीह तऽ माल जालक देखभालमे ओ अपन परिवारक मदद करैत छलीह। In the land of the Masai in southwest Kenya, there is a girl named Rebecca. Rebecca lives near a large national park where there are golden lions and big grey elephants. Rebecca's family keep cattle, sheep, and goats and depend on farming the land for food for their animals. Rebecca goes to school and helps her family care for the animals when she is home. एकटा बड्ड गुमार वाला दिन रेबेका अपन मायक कानैत देखलक। एहि बेर हमरा सभक फसिल नीक नहि भेल, ओ बाजल। आब अपना सभक बकरी आ भेड़ा सब मरि न जाय। One very hot day, Rebecca finds her mama crying. Mama in Kiswahili is for mother. Our crops have been bad this year, she says. Now our goats and sheep might die. Mama is Kiswahili for mother. स्कूलमे रेबेका अपन शिक्षिकासँ पुछलक जे एहि वर्ष एतेक कम बरखा किया भेल। एहि वर्ष दिनक दिन बीत गेल मुदा बरखा भेबे नहि कयल, ओकर शिक्षिका बजली। जखन बरखा नहि हैत तऽ गाछ केना बढ़त? बिनु गाछ पात आ पानिक अपना सभक मालजाल मरि जायत। वर्गमे सब एकदम सकदम रहथि। ओ सब अपन परिवार लेल, अपन मालजाल लेल आ अपन सर समाज लेल चिंतित रहथि। At school, Rebecca asks her teacher why there has been so little rain this year. We have had many days without rain, says her teacher. When we have no rain, plants cannot grow. Without plants to eat and water to drink, our animals die. Everyone in the class is quiet. They are worried for their families, their animals, and their community. स्कूलक पुस्तकालयमे रेबेका बरखा संबंधी सूचना ताकय लागल, जे ओकरा पता लगलै से बड्ड दुखद रहै। ई विश्व गरम भेल जा रहल अछि आ कम बरखा भऽ रहल छै। ओ एकटा नव शब्दावली सिखैत अछि, जलवायु परिवर्तन। कार, बस आ हवाई जहाज सब हवाके मैल कऽ रहल अछि। गाछ सब काटल जा रहल अछि आ ओहिसँ घर बनि रहल अछि। आ कूड़ा सब जमीनमे गाड़ल जा रहल अछि। ई सब प्रकृतिके खराब कऽ रहल छै। At the school library, Rebecca searches for information about rain. What she learns is difficult. The whole world is getting hotter and there is less rain. She learns a new term, climate change. Cars, buses, and airplanes are making the air dirty. These are being cut down and used to make buildings, and trash is buried in the ground. All these things are harming nature. भरि दिन रेबेका उदास रहली। एकटा बच्चा एहि वर्ष संपूर्ण विश्वक मदद केना कऽ सकैत अछि? रेबेका एहि नव सीखल सूचनाक विषयमे अपन शिक्षिकासँ गप करबाक निर्णय केलक। ई विश्व लेल एकटा बड्ड पैघ समस्या अछि, ओकर शिक्षिका बुझबै छथि। मुदा किछु एहन गप छै जाहिसँ एहिमे मदद कऽ सकैत छी, जेना गाछ लगेनाइ, जाहिसँ प्रकृति मजबूत हैत। For the whole day, Rebecca feels sad. What can just one girl do to help the whole world?
Rebecca decides to talk to her teacher about what she has learned. It is a big problem for the earth, her teacher explains. But there are some things we can do to help, like planting trees to make nature stronger. रेबेका घर दिस जखने विदा होइत अछि, गर्मीक कारण ओकरा प्यास लागै छै, आ ओ अपन पानिक बोतल सँ पानि पीबाक लेल थमि जाइत अछि। मुदा ओकरा बरखाक कमीक विषय आ अपन सर समाय लेल ओ केना एकर निदान निकालत से सोचाइत रहैत छै। तखन ओकरा एकटा उपाय मोनमे अबैत छै। हम कतेक किछु जलवायु परिवर्तनक विषयमे सिखलहुँ, ओ सोचैए। जँ सब केओ एहि पर सोचत तखन एहिसँ खूब फायदा भेटतै। As Rebecca walks home, it is hot and she stops to drink from her water bottle. She cannot stop thinking about the lack of rain and how she can help her community. Then she has an idea. I have learned so much about climate change, she thinks. It would help if everyone knew about this problem. अगिला दिन रेबेका विश्वक बदलैत जलवायु आ केना लोक प्रकृति के नुकसान पहुंचा रहल छथि एहि विषय पर अपन शिक्षिका से एकटा व्याख्यान देवा लेल कहैत अछि। व्याख्यान होइत अछि आ तकर अंतमे रेबेका ठाढ़ भऽ कऽ सबसँ कहैत अछि जे ओ सब जे ई सिखलथि से अपन माय बापके घर जाकऽ सिखाबऽ। कनिये दिनमे सब एहि विषय पर गपशप करय लगैत छथि जे मनुख द्वारा प्रकृतिके केना खराब कयल जा रहल छै। The next day, Rebecca asks her teacher to give a lesson about the world's changing weather and the damage humans are doing to nature. At the end of the class, Rebecca stands up. She asks everyone in her class to go home and teach their parents about what they have learned. In just a few days, everyone is talking about how humans are harming nature. एक दिन बूढ़ बुढ़ानु सब रेबेकाक संग एकटा मीटिंग रखैत छथि आ प्रकृतिक संरक्षण केना कयल जा सकैए ताहि पर चर्चा करैत छथि। बूढ़ बुढ़ानु सब सूख कंबल ओढ़ने छथि जे लाल टुह अछि आ ओ सब हाथ आ गर्दनिमे ढेर रास चूड़ी कड़ा सेहो पहिरने छथि। एतेक पैघ समस्या चारू कात आ प्रकृति के बेसी नुकसान दूर रहैवाला नगरक लोक पहुंचा रहल छथि। एकटा वरिष्ठ कहलनि, केन्याक राष्ट्रपतिके एकटा चिट्ठी लिखै जाउ। हुनका ई जानकारी हेबाक चाही जे हमसभ बिनु बरखा नहि जीव सकै छी। भऽ सकैए तखन ओ प्रकृतिक संरक्षण लेल कानूनमे परिवर्तन करथि। One day, the elders hold a meeting to talk with Rebecca about what can be done to help nature. The elders' sukas are bright red and they have many bracelets on their heads and wrists. The problem they face is so big, and most of the harm to nature is happening in big cities far away from their community. Let us write a letter to the president of Kenya, one elder says. He needs to know that we cannot live with no rain. Then maybe he will make changes to our laws to stop harming nature. रेबेका ओहि चिट्ठीके लैत अछि आ अपन वर्गक आन छात्रके देखबैत अछि। ओ सब छात्र अपन परिवारक लोकके ओहि चिट्ठीक पक्षमे हेबाक प्रमाणक रूपमे नीचाँमे हस्ताक्षर करै लेल कहैत छथि। Rebecca takes the letter and shares it with her classmates. They each ask their families to sign their name at the bottom to show their support. नैरोबी में राष्ट्रपति मसाई समुदायक ओहि चिट्ठीके पढ़ैत छथि। हुनका लग देशक अन्य भागसँ सेहो कएकटा चिट्ठी आयल छनि। हमरा प्रकृति संरक्षण लेल कन्याक मदद करबाक चाही। मसाई समुदायमे सब कियो अपन घरक सोझाँ एकटा गाछ लगेबाक निर्णय केलनि। रेबेका अपन मायक संग एकटा खदाई खोदलक आ ओहिमे गाछ रोपलक। In Nairobi, the president reads the letter from the Masai community.
He has had many other letters from other parts of the country. I need to help Kenya protect nature, he thinks. In the Masai community, everyone agrees to plant a tree outside their home. Rebecca and her mother dig the hole together and put the seedlings in the soil. रेबेकाक विद्यालय में प्रिंसिपल छात्र सबसँ गप करैत छथि। ओ सब रेबेकाकेँ सबसँ आगाँ ठाढ़ होइ ल कहैत छथि। पर्यावरणक संरक्षण सबसँ पैघ काज थिक आ विश्वक सब लोकक एहि लेल सहयोग चाही। प्रिंसिपल कहलनि, मुदा हमसभ विशेष कऽ रेबेकाके धन्यवाद दैत छी जे हमरा सभके सिखबाक आ परिवर्तन अनबाक लेल प्रेरित केलनि। सोचि कऽ देखू जँ सभ गोटे अपना सभक समुदायक सहायता करितथि। रेबेका खूब प्रसन्न अछि। ओ पहिनहिएसँ सोचि रहल छथि जे ओ आ ओकर संगी केना पर्यावरण आ अपन समुदाय लेल किछु आर करथि। At Rebecca's school, the head teacher talks to all the students. They ask Rebecca to stand at the front. Protecting the environment is a big job, and everyone in the world has to help. The principal says, but we would like to thank Rebecca especially for helping us learn and make a change. Imagine if we all helped our community. Rebecca is so happy. She already is thinking about what she and her friends can do next to help nature and her community. कार्य 1. हमर पड़ोसी से प्रेम करू। उमेर 3 से 8 वर्ष। क्षमता सहृदय वार्ता। समान किछ कुर्सी। किया? समस्या समाधान लेल हमरा सबके दोसराक समस्या सहृदयतासँ सुनबाक चाही। सतही या पहिल भेटक अनुभवक विपरीत अपन परियोजना आ आकांक्षाक आधार वास्तविकताक बुझब बनाउ। अपनाके एक दोसरासँ जुड़ल हेबाक, अपनाके महत्वपूर्ण बुझबाक अनुभव हेबाक चाही। केना? जे क्रीड़ा आगाँ देल जा रहल अछि से छात्र लोकनिक मध्यक सझिया अनुभवके बाहर निकालबाक एकटा नीक उपाय अछि। एहिसँ एक दोसराक पृष्ठभूमि आ रुचिके नीक जकाँ बुझबमे आ सबके एके समुदायक हेबाक भावनाके बढ़ेबामे मदद भेटत। ई क्रीड़ा वर्गमे वा घरो पर खेला सकैत छी। 1. पूर्व कार्य क्रीड़ा प्रारंभ केलासँ पूर्व सबटा कुर्सीके गोल वृत्तमे लगाउ जाहिसँ सब कुर्सी एक दोसराक सोझाँ वाला क्रममे हुए। सबके बुझा दियौ जे सभक बेर एतै आ ओ सीट लेल रेस सावधानीसँ लगाबै। सबके वृत्ताकारमे कुर्सी पर बैसबा लेल बजाउ, कोनो कुर्सी खाली नहि रहै। 2. क्रीड़ा प्रारंभ। क्रीड़ाक प्रारंभमे एकटा नामित खिलाड़ी बीचमे ठाढ़ भऽ कऽ अपना विषयमे कोनो एकटा सत्य जानकारी सबके बतबैए। सब कुर्सी भरल अछि। जेना हमरा अपन पड़ोसी नीक लगैए जकरा एकटा छोट भाइ छै। कुर्सी पर बैसल ओ सब जकरा संगे ई कथन सेहो लागू होइ छै, ओ सब कुर्सीसँ उठि कऽ ओतऽ बैस जाइत जाहिसँ एहिमे सँ कियो गोटे एक दोसराक बगलमे नहि बैसि पाबथि। आ आब जे बीचमे ठाढ़ छथि हुनको कुर्सी चाही से एक गोटेके उठऽ पड़तनि। आ आब ओ उठि कऽ बीचमे ठाढ़ हेताह आ अपना विषयमे कोनो सत्य वक्तव्य देताह। जेना हमर स्पेनिश बाजैवाला पड़ोसी जे छथि से पसिन्न छथि, वा हमरा फुटबॉल जे पड़ोसी खेलाइत छथि से पसिन्न छथि। आ क्रीड़ा तावत चलैए जा धरि सभक बेर कमसँ कम एक बेर नहि आबि जाइ छै। Activity 1. Love my neighbor. Age groups 3 to 8. Skill empathy communication. Materials chairs. Why? In order to solve problems, we need to understand the experiences of others with empathy. We must look beyond first impressions and superficial levels and replace our projects and expectations with real understanding. It is important for us to feel connected to one another and feel valued.
The following game is a great way to uncover shared experiences among students, to deepen understanding of one another's background and interests, and to reinforce a sense of community. This game can be played in a classroom or at home. Setup. Make sure everyone understands that everyone will get a turn and that they need to be careful in raising the seats. It should be ensured before starting the game. Set up chairs in a circle facing each other. Invite everyone to sit in the chairs around the circle. 2. Play game. Play begins when the designated player standing in the middle of the circle makes a statement that is true about him or herself. For example, I love my neighbor who has a little brother. Everyone seated for whom this statement is true must stand and move to a chair not directly next to them. The person in the middle is also looking for a chair, thus leaving one participant without a chair. That person moves to the middle and continues the game by making a statement that is true about him or herself. Example, I love my neighbor who speaks Spanish, or I love my neighbor who loves to play soccer. The game continues so that everyone gets at least one turn to make a statement. 3. आत्मावलोकन क्रीड़ामे अपन अनुभव साझा करू. दोसराक विषयमे अहाँके की जानकारी भेटल? किछु नव कार्यक लेल किछु गोटेक तत्परता अहाँके आश्चर्यचकित केलक? असगर रहबाक अनुभव केहन छल? जखन अहाँ देखलहुँ जे अहाँक अनुभव दोसरो लोक लग छनि तकर अनुभूति केहन रहल? कार्य 2. आशा हमर चारू कात अछि. उमेर 5 सँ 12. क्षमता, सहृदयता, आत्मविश्वास. सामग्री कागज, कलम वा कैमरा. किया? कखनो काल ओहि छोट छोट वस्तुक हम महत्व नहि बुझैत छी जे हमरा सभक चारू कात अछि आ हमरा सभक जीवनके अर्थ दैत अछि. परिवर्तनकारी लोक मात्र समस्या देखते नहि छथि वरन ओ ओतऽ अवसर सेहो देखैत छथि. परिवर्तनकारी आशा से आगाँ बढ़ैत छथि, डर वा भय से नहि. केना? ई 5 दिनका काज थिक आ अहाँके 5 टा वस्तु तकबाक अछि जे एहि 5 दिनमे एकाएकी अहाँके प्रसन्न केलक. एहिसँ अहाँक चारू कातक वा अहाँक भीतर स्थित शक्तिक अहाँके परिचय कराओत. सब दिन ओहि वस्तुक नाम लिखू, चित्र बनाउ वा फोटो घिचू जे अहाँके प्रसन्न केलक. सोचू की अहाँके हँसबैए. की ई दोसराके सेहो हँसबै छै? अहाँके प्रफुल्लताके अनुभव किया होइए? जेना सब शुक्रके विद्यालयसँ घर जाइत काल किछु चहटगर खेबावला चीज अहाँ लऽ लैत छी आ सब संगी प्रसन्न होइत छथि. एहने एकटा फोटो संगी सभक संग खींचू. 5 दिनका बाद 5 दिनक घटना सब पर गहिंकी नजरि दौगाउ. कोनो मित्र वा परिवारक सदस्यसँ गप करू. ओहि सब घटनाक चर्चा करू जे अहाँके प्रसन्न केलक. अहाँ अपन आ अपन समुदायक विषयमे की सिखलहुँ? कार्य 3. अनुभव करब, सोचब, करब आ साझी करब. उमेर 5 सँ 15. क्षमता, गुण दोष देखैत सोचब, समस्या समाधान. सामग्री कागज, पेंसिल. किया? सहायता देखै आ विचारैसँ आओत. जेना निष्कर्ष लिखलासँ कम उमेरक लोक सीखल चीजके आत्मसात कऽ सकताह. अनुभव आधारित प्रश्न कम उमेरक लोकके अपन भावनाके चिन्हैमे आ बतबैमे सहायक होइत अछि. एकटा नीक विश्वक कल्पना कम उमेरक लोकमे अपनासँ आगाँ सोचबामे सहायक होइत अछि. ई क्रीड़ा असगरे वा किछु गोटे संग कयल जा सकैए. 3. Reflect. Talk about your experience in the game. What did you learn about the other people? Were you surprised when people jumped up for certain prompts? How did it feel to be up there alone? How did it feel when you discovered others shared your experience? Activity 2. Hope is all around me. Age 5 to 12. The skill, empathy, confidence, materials, paper, pencil, or camera. Why?
Many times we forget to appreciate the little things that surround us and give our lives meaning. Changemakers don't only spot problems, but they see opportunity. Changemakers are driven by hope, not fear or anger. How? This week long challenge is to look for 5 things that bring you joy each day. By doing this, you will begin to see the immense potential that surrounds you as well as the immense potential within yourself. Every day, write down, draw, or take a photo of something that brings you joy. Think about what makes you smile. Does this thing make others smile? Why do you feel joy? Example, every Friday you and your friends pick up a snack on the way home from school. It is a fun way to see all of your friends and enjoy a delicious treat. Take a photo of your friends with your snacks. End of the week reflection, talk with a friend or family member. Share with them everything that brought you joy. What did you learn about yourself and your community? Activity 3. Feel, imagine, do, share, age 5 to 15, a skill, critical thinking, problem solving, materials, piece of paper, pencil. Why? Empathy can be cultivated through observation and reflection. For example, writing down takeaways can help young people internalize what they have learned. Feeling related questions can help young people recognize and communicate their emotions with others. Imagining a better world can help young people think beyond themselves. This activity can be done independently or with a group. केना? क्रम एक अनुभूति। जे समस्या के अहाँ समाप्त करय चाहै छी तकरा चिन्हित करू। ओहि सब परिस्थिति आ आचरणक अभिलेखन करू जे अहाँक घर, विद्यालय आ समुदाय में चिंतित करैत अछि। कैकटा समस्या के अभिलेखनक बाद ई सब प्रश्न अपना सँ पूछू। ई समस्या की छियै? एहिमे कोन तरहक पुनरावृत्ति छै? ई सब समस्या अहाँके कोन तरहे विचलित करैत अछि? ई सब समस्या अनका कोन तरहे विचलित करैत छै? एहि क्रियाकेँ सब दिन 1 सप्ताह धरि करू। क्रम 2 कल्पना करू। आब परिकल्पनाक समय अछि। जे सब अहाँ देखलहुँ ओहि आधार पर सोचू जे ई अनका केना प्रभावित करैत अछि। वार्तालाप, एहि प्रयोगमे के सब रहथि? के अहाँके कने अलग हटि कऽ लगला? किया? आब समाधान ताकै लेल मस्तिष्क पर जोर लगेबाक समय अछि। जतेक बेसी तरीका ततेक नीक। कोनो नतीजा पर नहि पहुँचू, सबटा संभावित समाधानक लिस्ट तैयार करू। वार्तालाप, केना ई समस्याक समाधान भेटत? दोसर तरीकासँ हम की सब कऽ सकैत छी? कोन कोन तरीकासँ अलग अलग विचारके जोड़ि कऽ एकटा आरो नीक तरीका निकालि सकैत छी? क्रम 3 करू। अपन सब विचार पर पुनर्विचार करू। अपन सबटा प्रिय विचारके वृत्तसँ घेरि कऽ चिन्हित करू। कोन विचार सबसँ उत्तेजक अछि? आब अहाँ कार्य करबा लेल तैयार छी। आब अहाँ ओहि तरीकाक प्रयोग करब जे सरल अछि, तकर नहि जे त्रुटिहीन अछि मुदा संभव अछि। आब ओहि तरीकाक प्रयोग करू, मुदा ध्यान एहिसँ उत्पन्न उत्पाद पर नहि, वरन ओहि उत्पादक प्रयोग जे करत तकरा पर राखू। एहि तरीकासँ सोचू। 1. ई केहन देखा पड़ैत अछि? 2. ई केहन अनुभूति दैत अछि? 3. ई केहन काज करैत अछि? क्रम 4 सझिया साझ। अपन समाधानकेँ दोसराके बताउ। एहिमे की काज करैए, की काज नहि करैए, ई केना आर नीक बनाओल जा सकैए, एहि सब पर हुनका सबसँ विचार लिअ। हुनको सबके कोनो नव तरीका तकबा लेल चुनौती दिअ। How? Step 1 Feel. Start by identifying a problem you wish to address. Write down all the situations and behaviors that bother you in your home, school, or community.
After writing down several problems, ask the following questions. What seems to be the problem? What patterns do you see? How do these problems make you feel? How does this problem make others feel? Repeat this activity each day for a week. Step 2. Imagine. Next comes the ideation phase. Taking what you have observed, think about how the problem affects others. Discuss who did you see as the people involved in the experience? What stands out to you? Why? Now it's time to brainstorm a solution. The more ideas, the better. There is no judgment in brainstorming. Write down ideas as they come. Discuss how can we fix this problem? What can we do differently? What are different ways we can combine certain ideas to make them even better? 3. Do. Review all of your ideas. Circle or vote on your favorite ideas. Which idea excites you the most? Now you are ready to take action. Here you are aiming for an idea that is easy to implement, not an idea that is perfect. Try implementing your idea and focus on the end user rather than the product. Think through the following: 1. What does it look like? 2. What does it feel like? And 3. How does it work? Step 4. Share. Share with others your solution. Get their ideas on what works, what does not work, and how it could be improved. Challenge them to come up with an idea too. रेबेकाक परिचय. Meet Rebecca. केन्याक परिवर्तनकारी अछि रेबेका. ओ अपना संग टेम्बी गर्ल्स एकेडमी में पढ़निहारक संगे अपन मसाई समुदाय के शिक्षा, समर्थन आ कार्यक माध्यम सँ पर्यावरणक मित्र बनबा लेल प्रेरित केलनि. रेबेका आ हुनकर कक्षाक आन मित्रकेँ पर्यावरण संरक्षणक लेल आपद कार्य करबाक खगता बुझाइत छनि आ ओहि लेल ओ सरकारके चिट्ठी आ सरकारक अधिकारी लोकनिकेँ ज्ञापन दैत रहैत छथि. Rebecca is a change maker from Kenya, activating her classmates at Tembe Girls Academy and community to be allies for the environment through education, advocacy, and action. Rebecca and her classmates share the urgency of protecting the environment and practical steps to take action. Writing letters and petitions to government officials. अशोकक विषयमे. About Ashoka. अशोकक विश्वास छै जे एहि परिवर्तनशील विश्वमे सभगोटे लेल ई आवश्यक छै जे ओ नव परिस्थिति लेल अपनाके तैयार राखथि आ परिवर्तनक धूरी बनथि, ओहिमे शक्ति दैथ. अशोक एकटा एहन विश्व समुदायक निर्माणमे लागल अछि जतय सभ परिवर्तनकारी हेतैथ. सब परिवर्तनकारी आंदोलनक पाछा एकटा सोच अछि जाहिसँ सब उमेरक लोक एहन परिस्थितिमे बढ़थि जाहिसँ सभक नीक लेल परिवर्तनक उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक शक्ति आ क्षमता होनि. www.ashoka.org. Ashoka believes the ability to adapt to and drive change is essential for everyone to thrive in a rapidly changing world. Ashoka is building a global community that is laying the foundation for a world where everyone is a change maker. At the heart of the Everyone a Changemaker movement is a vision to transform the way children and young people grow up so everyone has the power and a skill set to create change for the good of all. www.ashok.org. मसाई केर परिवर्तनकारी रेबेका सत्य घटना पर आधारित. Rebecca, the Masai Changemaker, based on a true story. Maithili
Translation by Gajendra Thakur. Voice by Gajendra Thakur. Images by Amit Mohanta. Copyright 2020. Asoka and World Reader. CC BY NC 4.0. Translated into Maithili by Gajendra Thakur. Gajendra Thakur is editor of Videha, first Maithili language fortnightly journal ISSN 2229-547X at www.videha.co.in. Translated into Maithili by Gajendra Thakur, Bhais Gajendra Thakur. Translator Gajendra Thakur is editor of Videha, first Maithili language fortnightly journal ISSN 2229-547X at www.videha.co.in. रेबेका मसाई केर परिवर्तनकारी केन्याक कम उमेरक बचियाक सत्य घटना पर आधारित अछि जे जलवायु परिवर्तनक बाद ओकर समुदाय पर पड़ल दुष्प्रभाव सँ चौंकि गेल। ओ एहि विषय पर अपन ज्ञान बढ़ेलक आ फेर अपन समुदाय आ सरकार के एहि पर कार्य करबा लेल प्रेरित केलक। ई बाल चित्रकथा अशोक आ वर्ल्ड लीडरक बीचक सहयोगक परिणाम अछि। ई पोथी सब ठाम बच्चा के परिवर्तनकारी बनेबा लेल प्रेरित करबाक आ पैघ क हुनकर एहि कार्य में सहयोग करबाक उद्देश्य सँ रचित कयल गेल अछि। Rebecca, the Masai Changemaker, is inspired by the true story of a young girl in Kenya who was alarmed by the signs of climate change in her community. She educated herself about the problem, then galvanized her community and the government to take action. This children's picture book is the result of a collaboration between Asoka and World Reader. It is intended to inspire children everywhere to become change makers and encourage adults everywhere to support them in their journey. ई बाल चित्रकथा अशोक आ वर्ल्ड रीडरक बीचक सहयोगक परिणाम अछि। ई पोथी सब ठामक बच्चा के परिवर्तनकारी बनेबा लेल प्रेरित करबाक आ पैघ क हुनकर एहि कार्य में सहयोग करबाक उद्देश्य सँ रचित कयल गेल अछि। This children's picture book is the result of a collaboration between Asoka and World Reader. It is intended to inspire children everywhere to become change makers and encourage adults everywhere to support them in their journey.